So good morning, everyone. So today we are going to see the C programming. So before we start C programming, let's talk about a basic thing. So with basic thing, we will go ahead. So just I will share the screen. Okay. Is it visible? PPT is visible? Yes, sir. Okay. Thank you. So I want this session should be interactive, not in a one way. So what is a computer? Because we are going to learn a C program, right? It is related to computer. So what is a computer? Anybody? Quickly. Yes. What definition of a computer? Yes. Anybody? Let it be जो भी आंसर है, don't worry about that. कि वो करेक्ट ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है? What is an computer? So let's. Okay. So take down this. So computer, what is a computer? The word computer comes from the word compute, okay, which means to calculate. Okay. So you can say a definition, or you can say a computer is an electronic device. Okay, so it is an electronic device that can perform arithmetic operation at high speed. So basically, a computer is invented for the fast calculation, high speed is required to calculate the calculation. So scientists develop a computer for that purpose. So basically a computer is an electronic device that can perform arithmetic operation at high speed. So a computer is also called data processor because it can store, firstly it will take some data input, then we have to store that data, we have to process that data, and we have to generate some output, okay, from that. So it is also basically it is called a data processor because it will store, process, and retrieve data whenever it is required, and it will generate an output whatever we desire. So this is the basic thing. So what benefit we are getting from the computer, right? So what are the characteristics of a computer? क्या क्या चीजें है कि वो we are, everybody is now using the computer. What different characteristics of a computer? Yes, anyone? Efficiency. Yes, efficiency is there. Okay, how efficient it is? In the sense efficiency. It can give correct answers accurately and Okay, okay, perform. efficiency regarding to that, but always it will give us the correct answer. No, not most of the time, but almost it can give the correct answers Yes, accurately. so efficiency is depend on what kind of output you are giving, what kind of instructions you are giving. Depend on it will generate the accurate accuracy, you can say. Okay, so accuracy is 100%. If you give the correct input and processing thing, everything, if you give the correct, it will generate 100% accurate output it will generate. Okay, if developer or the who is giving instructions to a computer that has a shortfall, or it have a logical problem, then it will give the wrong output, or it may decrease the accuracy. So this is the thing. So accuracy, so it have a certain points to that. Okay, another. So let's quickly we will go further. Okay, so first, automatic. Given a job, computer can work it on automatically without human
interventions that कि जो भी काम हम देंगे उसको कि वो विदाउट इंटरप्शंस वो कर सकता है, ऑटोमेटिक कर सकता है, बार बार कर सकता है. सो दिस इज द थिंग. सेकंड इज स्पीड. सो कंप्यूटर can perform data processing job very fast, usually measures in microseconds, nanoseconds, picoseconds. So I as said that it is invented for high speed calculation, right? So speed is very large as compared to humans. If you compare human, the way human calculates the thing and the computer calculates the same thing. So speed is very high. So this is the characteristic of computer. Then accuracy, just we have discussed that accuracy. That accuracy of a computer is consistently high and the degree of its accuracy depend upon its design. Design मतलब जिसने develop किया है उसके ऊपर वो depend है. So computer error caused due to incorrect input data or unreliable programs are often referred as a garbage. So garbage in, garbage out. So when you are doing a C programming, if you are not giving the correct instructions or correct inputs, that will ultimately generate the wrong output. So this is the thing. Okay, so accuracy is very high if you give the correct inputs to the computer. So that's why everybody is preferring computer, right? Next, what are the different characteristics is that diligence. Diligence means what? Like humans are have a lack of concentration. अगर किसी को बोला कि एक रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, you have to generate one report. So that person will do that report. But if I say do this 50 times, if I say do 100 times, so human have a tiredness, right? Then it will decrease the concentration. So lack of concentration is there. So as compared to humans, the computer can free from monotony, tiredness, and lack of concentration. It can continuously work for hours without creating any error and without a tiredness, right? So that's why we are prefer always a computer, right? So this is the benefit we are getting. So that's why we are using the computer. Then versatility. Versatility means what? Computer is capable of processing multiple tasks, okay? Or it can do multitasking in the sense that we can generate the system softwares, we can generate the word processing, we can generate the for calculation spreadsheets like that. So a number of softwares we can create are different types of tasks we can do. So that's why versatility is there. Then power of remembering. So this is the most different point is that we can forget after a long time. अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, आज आपको पता चले कि ये characteristics, but what after 6 months, what after 1 year? So it affects on human. So you can store the data permanently unless and until you remove, that will be kept in the computer. So computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage capabilities. Okay, so it forgets or loses the certain information only when it is asked to do so. Means हमने अगर कहा तो ही वो क्या कर देगा, इरेज कर देगा और रिमूव कर देगा unless and until it will remember everything in a secondary storage. What is a secondary storage? Secondary storage क्या होता है? Everybody knows the basic of computer, right? Secondary storage is in hard disks, right? Okay. So next characteristic of computer is no IQ, right? So everybody is talking now in AI and everything. So we are trying to give an IQ, but a computer does not have its own IQ. So a computer does only what it is performed to do so.
it cannot take its own decision in this regard. मतलब खुद से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है. So we have to give the instructions properly, then only it will do as per our instructions. So this is a thing. No IQ is there, no feelings again. So tiredness is not there. ये क्यों करना है, ये करना नहीं चाहिए, like this it will not have such a situation in regards with the computer. So these are the basic things which are related to computer, which enhance the capabilities of our humans. That's why everybody is using the computer right now. So computer, just I said that computer have a, we are giving an input to that, we are processing that, right? And then so we are capturing data, manipulating data, and generate the output, and that will become a information or the result or reports to us, which help us to for further process. Okay, data processing. So what is a quickly, we are not going to in details, but this is the input units are there, then CPU is there, central processing unit, which process the thing, and output. So input units are quickly type the input devices which you know quickly. Which are the input devices? Keyboard, yes, right? Yes. Other than keyboard now. Okay, mouse is there. Okay, correct. Or okay, scanner is there. Yes, correct. Or okay, webcam is okay. Good. Yes, you can give a input from webcam. Yes, microphones. Yes. Or if you are playing the games, joystick is there. So that is an input. Okay, joysticks. Okay. और एक जो है वो कोई बता नहीं रहा. That's I am waiting for. Okay, touch screen. Okay, touch screen is there, or you can say a digital pen. Okay, so digital pen is there. So which is the input device. Okay, so then output devices. Which are the output devices? We are giving input from the input device. We are processing and the output is generated. So what are the output device? Monitor. Yes, monitor is output device. Correct. Printer. Yes, printer is there. Yes, monitor, printer. Other than that. Okay, speaker, yes, correct. Speaker is there. Okay. Or okay, projector, yes, correct. Projector is also there. We generate an output and we are showing the data to the students or the audience. Yes. Or oh, uh, headphone. Okay. Microphone will give the output to the headphone. Okay. So there is one device that is plotter, which is a big, huge, you can say a printer it is, but is a plotter for drawing the maps and all that thing. So plotter is also there, which is device as a output unit. Okay. So we have a input device we are through which we are inserting or giving input to a computer. Then we have a output device. So in between we have a central processing unit, right? In that what is there? So control unit is there. So which is taking the input, then it will hand over the that data for if it is require arithmetic operation to the arithmetic logic unit. Again, it will take and it will give the output. If it is required, it will store that in secondary storage, right? So what is a primary storage? उसमें क्या क्या आता है प्राइमरी स्टोरेज में? RAM ROM. Okay. So what is RAM?
रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो जो भी कुछ हम इनपुट दे रहे हैं, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, जो भी इनपुट दे रहे हैं वो कहाँ पे रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में रहेगा। वट एवर द प्रोसेसिंग इज गोइंग टू हैपन, कहाँ पर होगा, रैम में होगा। इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर हम बोलते कि ये लेटर मैंने लिखा है उसको स्टोर करो, देन इट विल बी stored in hard disk, which is nothing but the secondary storage, right? So everything, the processing will be done in RAM. Okay, देन अगर लाइट चली जाती है तो क्या होगा, रैम में कुछ डेटा है तो रहेगा या चला जाएगा। Yes, it will remove, or it is volatile. So RAM is volatile. So जब तक पावर है तब तक रहेगा, ठीक है, उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ मुझे बताओ कि आपके पास ये सारे हार्डवेयर्स है, ठीक है, जैसे कि इनपुट है, सीपीयूज आपके पास है, सब उसमें लगाया गया है, आउटपुट डिवाइसेस देयर, मॉनिटर वगैरह सब है, वायर वगैरह सब लगा है। सो कैन आई यूज द कंप्यूटर नाउ? हेलो, can I use the computer if I connect hard? See, these are called hardware, right? Input devices, CPU is there, and output devices is there, right? So everything is this is called as a hardware, which are nothing but the physical part of physical components of a computer. If I connected all the devices to each other, can I work now? Power वगैरह on कर दिया, सब कर दिया, can I work? CPU is there, इनपुट डिवाइस इज देयर, सीपीयू इज देयर, ये जो भी डायग्राम दिखा है सब है, सब डिवाइसेस है, कनेक्टेड है, सब है, बट कैन आई वर्क नाउ? यस और नो? देर इज दो, ओनली दो ही चॉइस है ना, आइदर यस होगा या तो नहीं, नो होगा, राइट? यस, तनिष बोल रहा है यस। कैसे काम कर सकते हैं तनिष? यस, अभी केतन आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है, यस। हाँ, नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड, व्हाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, नहीं चलेगा, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा। सो आता है पार्ट सॉफ्टवेयर। सो वेन एवर यू रिक्वायर्ड, जैसे कि हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, तो टू टू यूज द कंप्यूटर वी नीड अ सॉफ्टवेयर, राइट? सो सॉफ्टवेयर इज अगेन two type of softwares are there, right? System softwares and application softwares. So system softwares क्या है? System softwares, operating system. So system softwares, which is nothing but operating systems basically. Operating system क्या करता है? What is the basic? कौन बता सकता है कि yes, Dhanashree is saying that operating system is the interface between the user and hardware. Yes, it is an interface between the user and hardware. But करता क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, होनी चाहिए आपकी कि करता क्या है। इंटरफेस है, बराबर है, बट व्हाट इट डज बेसिकली? You are saying is right, it is an interface. Okay, so Priyanka is saying that it controls and manages the computer hardware. Yes, Process data. It will process process data. data, Okay, security data, okay. resource allocation. So that are the utilities. You are saying that control and manage the resources, right? So that is there. But basic क्या है? उससे भी बेसिक पहले आता है। तो जैसे कि धनश्री ने बोला, इट इज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। सो बेसिकली इट make ready the computer
to use. वो क्या करता है, सारे रिसोर्सेज जो भी हार्डवेयर पार्ट्स उसको सब एक करके हमें रेडी स्टेट में देता है कि नाउ यूजर कैन वर्क ऑन दैट. ठीक है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम is nothing but the interface between the user and computer, and it makes ready to use first thing. Then you can say you can control the resources, whatever hard disk में क्या रखना है, कैसे करना है, hard disk कैसे manage करना है, वगैरह वगैरह, everything is there, right? Now Ketan कह रहा है convert human language into machine language. No, operating system make ready to use, so user can work on that and he can use the resources, first basic thing. देन आता है एप्लीकेशन, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा. देन आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क, राइट, इन रियल लाइफ. So if I want to create a document, right? So Word software is there. If I want to make the calculation, there is Excel. We want to just, I am showing you the PPT. So if I want to generate a PPT, so PowerPoint presentation software is there. So this is nothing but the application software. Okay. So which is designed to perform for a specific task. That is called application software. I think you got the thing. So what is operating system? Then what is a application software and everything. Now, basic question, what computer understand? Yes. आप मुझे बताओ. Yes. Machine level. Yes. 0 and 1s. Binary language. Correct. So, okay. Instructions in binary language. Okay. So, it is a electronic device. It is a machine. So, machine can only understand in zeros and ones. So, signal 0 on off. Okay. So 0 and 1 or on and off. That is nothing but the binary language which directly understand by the computer. So can you write the instructions in binary? Are you able? No. Why no? You can write a code or the instructions in binary, but it is very difficult to, first thing it is very difficult to write that things, right? ठीक है. प्रॉब्लम क्या है, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बट उसको क्या लिखा है, किसी ने दूसरे ने लिखा तो वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें प्रॉब्लम है. हमें लिखने के लिए पहले तो प्रॉब्लम है, दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम है. थर्ड थिंग इज मैनेज, अगर कुछ गलती हो गई तो उसको चेंज करने के लिए प्रॉब्लम है, राइट. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू read, write and manage the things. So that is a binary machine level language. So it is also called as a low level language. So zeros and ones is a low level language which understand the basically understand by the computer. So we have a difficulty in that. So मशीन को तो समझ में आ रहा है, बट हमें दिक्कत है. Humans have a problem. Then scientists have developed a which language, low level language के बाद क्या फॉर्म किया गया? Anybody? Yes, guys. So there is a assembly language was there. So what is meant by assembly language? Anybody? So in assembly language, they have certain symbols. Okay, predefined symbols they have
डिफाइन कि इसका मतलब ये होता है, ये होता है। सो उससे क्या होगा, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी रिड्यूसेस काफी, मतलब दे कैन यूज सम सिंबल्स एंड अगेन देयर इज अ low level language, so it is a combination of that. So assembly language still it have a problem that human have a problem for writing, reading and maintaining that language, which basically computer understand, right? So assembly language was there after the low level language. Then scientists think about that ki why we cannot write in our day-to-day life language, and then it should ultimately convert into the binary language or which understand by the computer. So this is come into existence of high level language. Okay, so high level language, what it does, as we speak, just now I am speaking in English, right? So can I give instructions in English, and ultimately after that it should transfer or translate into the machine level language, and it do the their work. So in high level language we are writing a code in simple English that is going to compile or translate that code into the machine level, so machine can understand and it will do the work, right? So C is a higher level language as well as it is called as middle level language. Why so? Because in C you can also write a low level coding. Some of the coding which is low level, you can also write in that. So some of the books you will find that it is also called as a middle level language. Why? Because it have a features of high level language as well as a low level language. So it is also called a middle level language or it is a high level language. Okay, so we are coming to the part of C now, language. सो हमने यहाँ पे सीखा कि कोई तो लैंग्वेज चाहिए कि विच शुड वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ठीक है, आइदर आप लो लेवल में लिखो, असेंबली लेवल में लिखो, नहीं तो हाई लेवल में लिखो, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द मशीन लेवल एंड देन इट विल वर्क। सो दैट्स द पॉइंट दैट C is coming to existence, that is a high level language. ठीक है, so just I will open the another PPT. So let's quickly, sorry, is it visible? PPT is visible? Yes. Okay. Yes. Now, uh, let's understand the quickly history and then we'll go further. Okay. How the C is come into existence. So basically, in 1970, you can read this. C language was developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratories in USA in 1972. So previous that, Ritchie and Thomson in 1970, Ken Thomas started developing unique operating system at Bell Labs using assembly language. What is assembly language? I just told you, and created the B. So first they have developed A, some of the language A, then now they have created assembly language and then created the B language. Prior to this, these two were working on multiple multiplexed information and computer service, right, operating system. And
thought of new operating system and develop Unix. Okay, unfortunately B had a limitations. ठीक है, B लैंग्वेज को उन्होंने नाम दिया था तो उसमें limitations थी. So क्या था, तो it compiles to a threaded rather than executable code, thereby generating a slower code during the program execution. So therefore, it was an inadequate for the development of an operating system. Then in 1971, Dennis Rich started the development of B compiler. So what is mean by compiler? So as I said that you have to translate the higher level language code or instructions to into executable code. So compiler does that work. So Dennis Ritchie was developing or creating the B compiler which is able to directly generate executable. पहले क्या था, वो threaded था, compile threaded, अभी generate a executable code. The resulting language was named as newbie. So उसने जो B develop किया उसने उसको नाम दिया newbie, and that was very much popular, and ultimately he has given the name as finally known as C language. So this is the history of a B language. Okay. Then what is a, जैसे कि हमने देखा अभी कि low level language also called as machine level programs written using zeros and one. Middle level also called as assembly language programs are written based on instructions of a CPU. Some their symbols are there. High level language. So in high level language, English based instructions are there. Hardware independence. Hardware मतलब हमें मशीन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, जीरो और वंस में देने की जरूरत नहीं. वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन इन सिंपल इंग्लिश एंड दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेबल कोड एंड दैट विल रन. एंड obviously it is a structure program, it have some structure. What is mean by structure? In English we have some grammar. ठीक, अगर हम इंग्लिश भाषा में बात करें तो उसका एक ग्रामर है, राइट. इफ आई एम टॉकिंग इन हिंदी, हिंदी का ग्रामर अलग है. मराठी, इफ आई एम यूजिंग मराठी, किस तरीके से लिखना है उसका ग्रामर अलग है. द वे वी राइट, द वे वी स्पीक, so that is a structure, or it is here it is called as a syntax. Okay, so grammar, it is nothing but the syntax here in C programming. Okay, now what is the different features you have in C programming? C programming के क्या क्या, जैसे हमने कंप्यूटर के फीचर्स देखे उस तरीके से हम अगर सीखेंगे कि अभी what is a feature of C programming. So let's quickly do that. So quickly take down this. It is very important. जो भी हम सीखने वाले हैं इसमें से it is related each and everything. So quickly take down this slide. Then we will understand. ठीक है. और आप भी बताओ when you finish. Let me know what is mean by modularity and portability. Okay. So quickly take down.
Yes, anybody can tell what is mean by modularity, यहाँ पर क्या कहा गया है? What do you understand? Yes, anybody wants to Breaking down, try? Hmm? breaking down a large module into small modules means a large task into small subtask. Okay, yes, okay. And how it does? मतलब किससे कर रहे हैं, बराबर है ये, बट किसके थ्रू सी में होता है? एनी आइडिया? ओके, फर्स्ट थिंग इज द मॉड्युलैरिटी. देखो, सो एबिलिटी टू break down a large module into manageable sub module called modularity. That is an important feature of structure programming language. मतलब क्या, एक बड़ा टास्क है आपके पास, उसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर काम करते हो. इन स्मॉल टास्क यू आर गोइंग टू डू द थिंग, सो पैरेलली सारे टास्क चलेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा. इस तरह अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, टेक एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन, जो भी amazon.com है या फ्लिपकार्ट इज देयर, राइट? सो they are going to divide their tasks in n number of different छोटे छोटे tasks में, and each one will do the task, so that task can be completed in very less time. Similarly here, so here it is called as a modularity. यहाँ पर मतलब है कि functions, ठीक है. तो अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो you have to divide your tasks in small small part, and you have to write a different functions to complete that, right? कि जैसे कि मुझे एडिशन करना है तो मैं एडिशन का एक फंक्शन लिखूंगा, सब्सट्रैक्शन करना है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, simple interest, right? Area of circle, like that n number of tasks will be there. ठीक है, कैरेक्टर है तो कितने कैरेक्टर है, ठीक है, हर एक के लिए मैं अलग अलग फंक्शन लिखूंगा, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू क्लब एंड माय प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीट. सो दैट इज कॉल्ड मॉड्युलैरिटी. सो इन सी प्रोग्रामिंग एवरीथिंग इज फंक्शन, फर्स्ट थिंग, ठीक है. सो project can be completed within the time period. Debugging is faster and easier. Means what? कि अलग अलग टास्क बनाए, अलग अलग हम फंक्शन, अलग अलग लोगों को हमने काम दिया है, ठीक है. तो क्या होगा, अलग अलग पैरेलली काम हो रहा है, उससे टाइम कम लग रहा है. अगेन अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वी हमको क्या करना होगा कि सारा प्रोजेक्ट देखना की जरूरत नहीं. वी नीड टू सर्च ओनली कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, कौन से फंक्शन में प्रॉब्लम है. वी आर गोइंग टू सी दैट ओनली एंड जस्ट वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई दैट. दैट इज कॉल्ड डिबगिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. सो पर्टिकुलर फंक्शन को चेंज करेंगे तो वो सब कुछ चलने लगेगा. अदरवाइज वी हैव टू, अगर एक ही प्रोजेक्ट सब लिखना है तो सब सर्च करना पड़ेगा, कहाँ गलती है, तो अगेन वी हैव टू रेक्टिफाई दैट. तो ये नॉर्मल वे है. अभी मॉड्युलैरिटी में क्या है, अलग अलग फंक्शन है, उस किसी फंक्शन में प्रॉब्लम है, जस्ट वी हैव टू रेक्टिफाई दैट, देन इट विल बी इजी टू डिबगिंग. इसका तो फास्टर मैनेज हो सकता है, इजीली काम हो सकता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड मॉड्युलैरिटी. सेकंड फीचर क्या है सी प्रोग्रामिंग का? पोर्टेबिलिटी. व्हाट इज मीन बाय पोर्टेबिलिटी? कि जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा है या इंस्ट्रक्शंस लिखी है, तो वो आप इंस्ट्रक्शन दूसरे जगह पे लेके जा सकते हो, वहां पर कंपाइल करके आप रन कर सकते हो. दैट इज मीन बाय पोर्टेबिलिटी. द एबिलिटी टू पोर्ट, दैट इज इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी. मतलब आपने अगर अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई, अगर मैंने वो आपको दी तो आप भी वो उसको यूज कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी.
So C language offer highest degree of portability. Percentage of changes to be made to the source code are at minimum when the software is to be loaded in another platform. ठीक है, इसका मतलब ये है, अंडरस्टैंड दिस, कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट में एक सी बनाई है तो इट विल डेफिनेटली रन विदाउट एनी चेंजेस इन अनदर प्लेटफॉर्म दैट इज माइक्रोसॉफ्ट. बट if you want to run your source code in other platforms Unix में, तो a little bit changes if you have to do for compilation purpose, then it will create a executable there. Also you can run there. So a minimum changes if the cross platforms are there, otherwise it is a very much portable. ठीक है, source code is means what, कि जहां पर हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उसको कहते हैं कि सोर्स कोड. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज द 2 points which have a characteristic of C. Then लिख लो ये क्विकली, then we will discuss. Now let's discuss the thing extendability. What is mean by extendability? Ability to extend the existing software by adding a new feature is called extendability. आप जो भी C का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं. How you can extend your C programming, that you can write your own functions for different purposes. So it have a ability to extend. ठीक है, फिर आप बोलोगे कि मिनिमम कम से कम कौन सा प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, विच इज द वेरी मच स्मॉलेस्ट कोड विच आई कैन राइट इन सी प्रोग्रामिंग. सो जस्ट आई विल टेल यू, जस्ट हम यही करने वाले हैं अभी. सो दिस इज द थिंग. सो दिस इज द minimum code which you can write in C programming. This is a very smallest code that you can type and which run perfectly, but it will not do anything.
So this is the smallest program that which we can write. So void main, then curly brackets, and it will run. So it will run but not do anything. So such a small program we can write, and we can extend the program as we want. Okay. So this is the thing. So we can extend the ability of a C programming of writing different functions for different purposes. कि आपको क्या काम करना है, ठीक है, आपको साइंटिफिक काम करना है, राइट? So you can write a scientific functions for that. If you want to write a commercial application, you will write a functions for that, right? So it will extend the ability of C programming for your project, right? C. Then speed. C is also called as a, just I now said that C is also called as a middle level language because programs written in C language run at the speed matching to that of some same program written in assembly language. Okay. So C language has a both merits of high level language and middle level language. And because of this feature is mainly used in developing operating systems. So it is as if you compare with the high level language, the speed is high when you write a code in C because it is near to low level. That's why speed is very high. Since it is near to low language, you can create a different operating system like Unix, okay, or a different operating system. New operating system also can be created using C programming. Okay, so speed is high and it is used to create the operating system, that is system softwares we can generate through C programming as well. Another feature is a flexibility. What is mean by flexible? इस तरीके से C program flexible बनता है. So C language have a right number of reserved words which allow the programmers to have complete control on the language. ठीक है, जैसे भी कोई लैंग्वेज में क्या होता है कि अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज होते हैं विच इज इनहांस दैट लैंग्वेज. सिमिलरली सी हैव 32 keywords, okay, which are called as a reserve words. What is mean by reserve words or keywords? Can anybody, what is mean by that? कीवर्ड का मतलब क्या है या रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है? What its significance to C language or the compiler? Okay, Aditi is saying it is can't be used as a variable name, right? और उससे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? व्हाट इज मीन बाय कीवर्ड? इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड. सो वो हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर या फंक्शन या कुछ के लिए यूज नहीं कर सकते. इट आर रिजर्व वर्ड्स, करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट हैव अ स्पेशल मीनिंग टू अ कंपाइलर. अब ये बात आता है कंपाइलर. मैंने वही बोला कंपाइलर मतलब क्या है. जैसे कि मैंने अभी दिखाया एक छोटा सा कोड दिखाया, ठीक है. सो वो आपको इट इज रिटन इन, that is called as source code and it is written in high level language. We need to convert that which can understand by a machine, which is nothing but binary code, right? Executable code. So उसके बीच में क्या है, जैसे कि हमें जो कोड है सोर्स कोड अंडरस्टैंड हो रहा है बट कंप्यूटर को 0 and 1 ही समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूटेबल कोड ही समझ में आएगा. तो बीच में कोई तो चाहिए. सो दैट रोल plays a compiler or interpreter is there. So two are there, or sometime assembler is also there, which convert the instructions in computer understandable instructions. ठीक है, तो वो कंपाइलर. ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है जिनको पता है? Compiler does the same thing which translate the code into the machine level. ठीक है, interpreter also do the same thing, but
difference is that the compiler, अगर आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो उसको पूरा के पूरा वो कंपाइल करता है एंड इट इज जनरेट द एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, अगर एरर आती है तो वो सारा कोड कंपाइल करेगा, फिर बताएगा कि ये एरर है। ठीक है, देन यू हैव टू रेक्टिफाई द कोड। ठीक है, वो सब करके देखेंगे तो पता चलेगा, अभी तो जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। Then interpreter is what? It will take one instruction, then it will compile then executable code. Then it will take second instruction, like that one by one it will take. If any of the instruction is wrong, it will not go further. Execution होगा ही नहीं आगे का. So this is the thing. So line by line it is going to compile or translate in a interpreter, and whenever the it encounters the error, it will stop there. You have to rectify there itself, and then you can proceed further. Whereas compiler will compile entire code of your program, and it will compile, it will show the error, then you rectify, and then it will be executable code is there. So this is the difference, but the work is the same, that it translates the source code into the machine level or executable code which understand by the computer. Okay, so basically keywords are the reserved words and which have a special meaning to a compiler. ठीक है, मतलब कंपाइलर को पता है कि इफ का मतलब क्या है। इफ का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, एल्स का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, स्विच का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं। सो 32 कीवर्ड्स आर देयर, उसका मीनिंग उसको ऑलरेडी पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अ स्पेशल मीनिंग टू अ कंपाइलर, उसको पता है ऑलरेडी। ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सो विल टेक अ पिक कि फर्स्ट प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है। ठीक है, सो क्विकली टेक डाउन दिस। सो विल टेक डाउन दिस। ओके, each and every line will going to explain. So quickly take down this.
Yes, so let's discuss the thing. So you have noted well, good. Uh, so what is hash include stdio.h? So this is called as a header file. Okay. So is also called as a pre-processor. ठीक है, directives. तो ये क्या करता है मैं बताता हूँ पहले तो. We'll go to the second line void. So void means क्या है? Returnable type है, which is nothing specific to any particular data type. ठीक है. वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज मुझे आपको कोई टास्क अगर देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 नंबर का आपको एडिशन करना है. ठीक है, तो ये टास्क है. टास्क इज नथिंग बट इट्स फंक्शन कि आपको काम करना है. ठीक है, कि 2 नंबर मैं दूंगा, आपको एडिशन करनी है और मुझे एडिशन करके बतानी है. ठीक है, सो इफ आई गिव अ नंबर 10 and 20. ठीक है, सपोज आई गिव अ नंबर 10, 20. So this will be input for you for that function. जो भी कार्य करना है तो उसके लिए 10 और 20 क्या है, इनपुट्स है. देन यू विल डू द ऑपरेशन जो भी है, मतलब अभी यहाँ पर एडिशन है. सो यू विल डू द एडिशन ऑफ दैट. सो यू विल जनरेट द रिजल्ट. ठीक है, 30 आप करोगे कि 10 + 20 30 है. बट आप आपके पास ही रखोगे क्या? नहीं, बिकॉज मैंने आपको कहा है कि इसका एडिशन करो. फिर यू विल रिटर्न द आंसर टू मी, राइट? सो दैट आंसर इज गोइंग टू बी रिटर्न टू मी. दैट इज कॉल्ड अ रिटर्नेबल डेटा टाइप. ठीक है, 30 इज गोइंग टू रिटर्न टू मी. ठीक है, सो यहाँ पर मेन एक फंक्शन है और ये कह रहा है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. इट इट इज नॉट रिटर्निंग एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप. ठीक है, आगे और सीखेंगे कि रिटर्न कैसे करना है, उसका डेटा टाइप क्या है, वगैरह वगैरह सो फॉर. सो वाइड इज आगे एवरीथिंग इज रिटर्न, आपको मैं लिखने के लिए भी दूंगा. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड वाइड. सो रिटर्नेबल डेटा टाइप इज, यहाँ पर मेन फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग देयर वाइड. मेन इज अ मेन फंक्शन इज गोइंग टू बी राइट. हर प्रोजेक्ट में मेन एक होना जरूरी है. एक से ज्यादा मेन हो नहीं सकते पूरे एक प्रोजेक्ट में, अदरवाइज इट विल गिव अ प्रॉब्लम. तो एक ही मेन होना चाहिए और मेन से ही आपका सी प्रोग्रामिंग चालू होता है. सो मेन इज अ स्टार्टिंग point you can say for C programming. So main is also a one function, ठीक है, which loads in a memory and it start executing the code. So main क्या है, function, main function है, ब्रैकेट्स है, करली ब्रैकेट्स. सो हियर यू कैन गिव समथिंग इनपुट्स टू अ मेन. जैसे कि मैंने बोला एडिशन आपको करना है तो आपको 10 and 20 दिए, 20 and 10 दिए, तो ये इनपुट्स है. तो मेन इज ऑल्सो फंक्शन. We can send some inputs to a main as well. At the last, we'll see that how to do that. So main is a function and which can also accept the number of inputs. Is nothing technically कहना है तो arguments, parameters it is called. तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर नहीं दिए, इनपुट्स नहीं दिए, तो एम्प्टी ब्रैकेट्स है. ठीक है, तो it is empty brackets that we are not sending any input to that, but you have to write a empty brackets for that. Then curly, this is the starting body of a main and this is the end of a main body. ठीक है, और इसके ये जो बॉडी है मेन की, उसके अंदर आपको लिखना है कि क्या करना है, क्या क्या काम करना है. सो हियर printf एक दूसरा फंक्शन है which can display the output or message on the screen. सिंपल. सो printf ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है. तो जैसे मैंने बोला था एवरीथिंग इज अ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो मेन भी फंक्शन है, printf भी फंक्शन है.
फिर ये क्या है ब्रैकेट से, सो करली ब्रैकेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको डेटा सेंड कर रहे हैं प्रिंटफ को कि क्या ये प्रिंट करो, कहाँ पर, स्क्रीन पे। सो printf is a function we are sending a string or the message to print on the screen। ठीक है, तो ये हुआ, we are calling the printf function and at the end we are giving a semicolon। तो जैसे भी कोई लैंग्वेज में क्या होता है, सो इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव अ फुल स्टॉप, दैट इज ये printf फंक्शन हमें सी को बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसको क्या करना है। तो उसका डेफिनेशन या उसकी जो बॉडी है वो कहाँ पर लिखी है, तो इस फाइल में लिखी है। दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दैट फाइल इन आवर प्रोग्राम। मतलब क्या है, इट इज अ फाइल इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस लिखे गए हैं कि किस तरीके से इनपुट लेना है, आउटपुट करना है। तो वो सारे फंक्शंस की एक हेडर फाइल है, उसमें सब कुछ लिखा गया है। सो विच हैव डेवलप इन सी। तो वो हमारे प्रोग्राम में हम वो ऐड कर रहे हैं यूजिंग हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड क्या करेगा, पूरा के पूरे जो भी फंक्शंस है stdio.h फाइल में, सारे फंक्शन हमें यहाँ पर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वो मिल जाएंगे और वो printf रन कर पाएगा। सो दिस इज थिंग। सो वन बाय वन टेक डाउन, देन कमेंट होते हैं, जैसे कि मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। सो यू कैन राइट लाइक दिस, ये सिंगल लाइन कमेंट्स आप यूज कर सकते हो या मल्टीपल लाइंस कमेंट, इस तरीके से कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोड। मतलब ये क्या है, जो प्रोग्रामर लिख रहा है या जो उसके ऊपर काम करने वाला है उसको ये क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, उसके बारे में, कोड के बारे में एक्स्ट्रा चीजें पता करने के लिए या बताने के लिए लिखा जाता है। दैट इज कॉल्ड कमेंट। सो कमेंट इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ कोड विच इज नॉट गोइंग टू बी कंपाइल्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ठीक है, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग या आपको मुझे बताना है इसलिए मैंने लिखा है। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोर्स कोड, सोर्स कोड का पार्ट है ये। ठीक है, सो टेक वन बाय वन बिकॉज इट इज वेरी बेसिक एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये लिखिए, सारा कुछ ऑलरेडी मैंने बताया, स्टिल यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, टेक डाउन क्विकली। आपका होने के बाद डन चैट में डाल दीजिए, सो वी कैन गो अहेड।
Okay, done. Most of the students, right? So let's बाकी लिख रहे तब तक quickly we'll go again. So comment is placed between these. So this is called multiple line comments. के बीच में जो भी है अलग अलग लाइन में लिख सकते हो तो वो it is not a part of your code. Then void main. So main is the name of the function. So main must exist in every program in C exactly once. एक बार ही होना चाहिए. मेन में कॉल अनदर फंक्शन मतलब मेन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को यूज कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो. कॉल करने से वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. देन void specifies that main does not return a value. वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज हियर लिखा गया है void. Then parenthesis. So the parameter of a function are placed in the parenthesis. So there are no parameters or arguments or the input in this case. So parentheses are empty. Braces, curly brackets. So beginning of the block in the example, it start the main body and end of the block, curly block. और है second thing. और क्या क्या हमने देखा है इस प्रोग्राम में. Quickly take down this. Once you done, then type done.
Okay, done. Yes. So printf is a function, a library function for display output on the screen. The requested output is specified in double quotes. आपको जो भी लिखना है वो double quotes में लिखना है. Then /n is there. So /n is new line character. So that is, it will display on the new line. Semicolon is there, end of the statement. Hash include, जैसे कि मैंने कहा कि one of the C preprocessor directives, the preprocessor will replace this line with the file indicate. मतलब मैंने बोला था कि पूरी की पूरी फाइल क्या हो जाएगी, वहां पर आ जाएगी at the time of compilation, and it will, compiler can understand the printf and it can execute the printf. Then लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन में आपको क्या, फाइल कौन सी है, स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी फाइल है, हेडर फाइल है, वो कौन सी आपको इंक्लूड करनी है, वो वहां पर देनी है. सो उससे क्या होता है, तो इट इज गोइंग टू सर्च द फाइल इन द स्टैंडर्ड डायरेक्टरी. मतलब क्या है, लेस देन ग्रेटर देन साइन से क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जहां पर डायरेक्टरी होती है वहां पे जाके सर्च करेगा. In furtherly, at the when you create your own functions, also you can write your own file, and that can be also included in your program. At that time, you have to give that header file in a double quotes. Current directory में रखना है और double quotes देना है. So it will search in the that current folder. So this is the thing. Then stdio.h is what? One of the C header file. It contains the declaration needed to perform input and output. ठीक है? So this is the thing. Now we are going to do the practicals. So we need a कि जिसमें हम source code लिख सके, ये program लिख सके, and we need a compiler that is going to compile our program. Then it will generate the executable code, and वो executable run करने के बाद हमें क्या आएगा, आउटपुट दिखाई देगा, या जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो रन होगा. सो उसके लिए हम we need to use a, जैसे कि you have to type Dev-C++ एडिटर. ठीक है, आपको क्या करना है, Dev-C++ यहाँ पे जाके सर्च करना है गूगल पे. ठीक है, देन यू कैन गो फॉर दिस. ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, जस्ट डाउनलोड दिस फाइल. ठीक है, फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज. ठीक है, सो ये आप करो. ठीक है, ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, सो आप में से कोई क्या कर सकता है, यू कैन शेयर योर, या आप सेकंड लिंक भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड करो. सो इट विल डाउनलोड द दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको क्या करना है, ये डाउनलोड करना है. ठीक है, एंड एनी वन ऑफ यू कैन शेयर द स्क्रीन, सो आई कैन शो यू द इंस्टॉलेशन. ठीक है, क्योंकि मेरे मशीन में मैंने ऑलरेडी किया है. ठीक है, इन एग्जाम यू हैव अ एमसीक्यूज, बट वहां पर एमसीक्यूज में भी कोड हो सकता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्निपेट्स. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लिखना है, सब कुछ करके ही आपको लर्न करना पड़ेगा. दिस इज द ओनली वे. ठीक है, उसके लिए हमें ये सारा कुछ इंस्टॉल करके करना होगा, सीखना होगा. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट अ कोड एंड एवरीथिंग. ओके, so quickly just download the software first, and let me know, any one of you can share the screen. then आगे का मैं आपको उस तरीके से बताता हूँ. then we will directly write a code in this editor. ठीक है, and we'll go further. So quickly download, everybody download the file, and any one of you which
If you have the laptop and you have downloaded the software, it is not going to take a very much time. And let me know. You can share the screen so everybody can see the installation and you can do it. ओके किसी ने किया है? So any one of you जिसने just download किया है can share the screen quickly so I can show the installation and everybody can see that. Just anyone can share the screen. Just I will give the instructions. Yes, on okay, किसके पास नहीं है Dev C++ can share the screen quick. Any one of you? Yes, who have a laptop not yet installed the Dev C++ software can share the screen quickly.
Hello. Anyone voluntarily, or should I take a name? Okay. Nia, can you share the screen? Hello. So actually my laptop having some issues. That's why I didn't share my screen Okay. and joining Varunda. later on. Okay. Varunda Kulkarni. So just can you share the screen? I accepted that one. Just click on share button once again and take the first option. Okay, yes. So Varunda has downloaded the things and click on the executable and it is seeing this. Click on next. Click on next. So it is saying which is the things. Okay, just click on next. Anyone other than that, किसी को किसी ने नहीं किया है? धनश्री, you have? Okay. ठीक है, और कोई जिसके पास नहीं क्विकली, और I assume that everyone have. ठीक है, right? So I will go ahead accordingly. So just I will explain the thing once again. So first you have to download that file and just click that exe file that install the C++. So you have to agree that you want to install that and say yes. Then अभी जो मैसेज आया था कि फॉन्ट कौन सा चाहिए क्या चाहिए, just you have to click next next next. It is going to install the software. So once you install the software, it will create a shortcut in desktop. So just I will share the screen. So we have this downloaded the file. Once you download the file in documents, you are going to see that executable file, and it is after the installation, it will create the shortcut here. So just double click that. Once you install, this will appear the such a way when you install the Dev-C++. So how to write a first program? Just you have to click here, say new, then source code. Then you have to write the code जो हमने अभी सीखा, hash include, right? stdio.h, then void name is okay. Then you have to write printf. So this is a function. You have to write, suppose I am saying welcome in C. Okay, like that, and say semicolon. Okay. Again, if I say here slash, okay, पहले इतना करते हैं. So this is the editor. Editor is means what? Where you can write the source code. ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर आप ये करते हो कि so this is called editor. ठीक है, IDE interface
फॉर राइटिंग द कोड। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो, देन यू कैन कंपाइल द कोड एंड यू कैन क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, सो now I want to save this file first. So save. So this is used for C as well as C++, right? So just I will create the folder in C program. So just I will create the today is what? It's 12. Okay. So 12 June 26 is a date. So I am creating the one folder so I can store the all the files in here 12 June, right? And I need to save that is .c is for C program. So you can see in C, we have C program, we have 12 June like this. So this is the .c file is there, which is saved. Now I need to compile. So this is the source code written in English. Now I want to compile. So this is the compile. Okay. So it is going to compile the things and it is showing errors or warning. If it is error, you need to rectify the errors. Warnings are, अगर आती है तो वो रोकेंगी नहीं आपका प्रोग्राम. You can rectify that one or let it be go. It will work finally. So there are no any errors, zero warning. So perfectly compiled. Now see when you compile, you can see the these things. So ये एक फाइल तैयार हुई. ये क्या फाइल तैयार हुई देखो. इफ आई से cmd dir कौन से फाइल से देखो. First program dot c is there. So this is source file and this is executable file which can understand by the computer. So how to run that? You can run from here as well or from IDE. तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये क्या बन गया. एक सॉफ्टवेयर बन गया, एक प्रोग्राम बन गया विच कैन बी पोर्टेबल. मतलब EXE यहाँ से आप मैंने आपको दी, आप भी रन कर सकते हो. ठीक है, सो हाउ टू रन दैट थिंग. सो यू कैन से source program dot exe run करनी है. That is executable. See, it is showing the output on the screen. देखो वेलकम इन सी प्रोग्राम. ठीक है, अगर मैंने वापस कुछ चेंजेस किए जैसे कि यहाँ पर /n nice to be here. ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिखा है एंड से सेव किया मैंने. अगेन आई हैव टू कंपाइल बिकॉज मैंने सोर्स कोड चेंज किया है. कंपाइल्ड, जीरो एरर, जीरो वार्निंग. अगेन इफ यू सी क्या होगा, exe change होगी. ठीक है, again if I say dir it will give the list of files or folders. So again this program I need to run. ठीक है, डॉट exe से एंटर. सी अभी क्या होगा देखो, वेलकम इन सी प्रोग्राम. /n से क्या होगा, it's come to next line, space है और nice to see you here. So this is the one way that you can run from command line. This is called command line interface. Or you can directly go from here run. So it will directly run from here. So they go, same thing is there. So this is the window is going to display the output on the screen. ठीक है, clear. Quickly do everyone. ठीक है, मैंने जिस तरीके से किया आप लोग करो. Write everything and do thing. Then we will go basic से लैंग्वेज से चालू करके हम अभी आगे सीखेंगे. Quickly do this so you can practice today as well and जिनको already पता है they can do the things. ठीक है, quickly do this. If you have doubt, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ.
तो ये कमांड लाइन से रन करने का तरीका है, ये भी आप ट्राई कर सकते, ठीक है। ओके, डन करके देखा सबने।
So just we'll so we have written a source code, then we compile it, generate a binary code that is executable.exe file. Source code is what? Program written in C programming. So अभी इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, स्टैंडर्डाइज कौन कर रहा है, तो एनसी. सो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, डेवलप एनसीसी कंपाइलर, ठीक है. सो एनसी इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट विच इज गोइंग टू स्टैंडर्डाइज द थिंग, ठीक है. तो ये कंपाइलर है, तो वो क्या करते हैं, डेफिनेशन प्लस शुड फॉलो द सर्टन रूल्स बाय द एनसीसी. तो कंपाइलर वो फॉलो कर रहा है which the rule is defined by ANSI. ठीक है. So binary code is what? System understandable code. तो ये देखा हमने. Now we are going to see कि बेसिक्स से सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से क्या क्या यूज कर सकते हैं. सो इन नॉर्मली इन जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वी आर writing some alphabet in that, then we will create the words in that, then we create a sentence, and in from the sentence we can write a paragraph or essay like that. So same thing is here. So what is the how we can build a things, okay, in C programming. So fundamentals we are going to start now. Okay, so what is hardware? Is a physical components of a computer. Software refers to program that makes computer do useful work or to perform a specific task. तो सॉफ्टवेयर के हमने दो टाइप देखे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So softwares are written to perform specific or particular tasks. Then in a software, there are n number of programs are there. So what is mean by programs, right? So a program is a sequence of instructions that computer follow to solve a particular problem. ये because जैसे भी अभी मैंने ये program लिखा, ठीक है, so there are certain instructions are there in sequence. Important है, sequence is very important. तो अगर आपने sequence गलत कर दिया तो वो उस तरीके से चलेगा नहीं. So what desired output is there, it is not giving if you are not giving the particular instructions in a proper sequence. So you need to decide कि कौन से sequence में देना है, then it will accomplish a particular task. So in other way, a computer program or just a program is a sequence of instructions written to perform a specific task on a computer. ठीक है. ये तो हम क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं. नाउ सो वी कैन यूज इन सिंपल लैंग्वेज में हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं. सिमिलरली हियर इन सी प्रोग्रामिंग अ कैरेक्टर सेट्स आर अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, लेटर्स, सम स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर इनवैलिड इन सी लैंग्वेज. तो लेटर्स अपर केस लिख सकते हो, लोअर केस लिख सकते हो, बट अपर केस एंड लोअर केस है वो डिफरेंट मीनिंग इन सी प्रोग्रामिंग. ठीक है. सो यू कैन यूज डिजिट्स 0 to 9 स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, वाइट स्पेसेस यूज कर सकते हो. तो कौन से? So these are the some of the special characters that you can use in C, right? So we'll see this one. Okay. So a comma is there, and person sometimes we are using, semicolon we are using, right? Then these are some special characters that can be used. Then white spaces, normally we are giving a new line के लिए slash n हमने किया है, right? Horizontal line like that we are going to use कर सकते हैं. ठीक है. Percent we are using, right, that thing. So these are the things allowed in C programming. Then what is basic concept is there? Token. So in C program, a smallest individual unit are called as token. मतलब everything is token. जो भी smallest part है, जैसे कि मैंने बोला keywords है, token है.
identifier, constant, string, operator, special symbol, everything is a token. So quickly take down this is a what is meant by token. A token is a smallest individual unit called as a token. Take down. And these are the some of the examples of a token. Quickly take down. Done. Type down when you complete quickly. Okay, good. So we'll go ahead. So keywords, we have already said that keywords are reserved words used in programming. Each keyword has a fixed meaning and that cannot be changed by the user. C programming is a case sensitive. मतलब क्या अपर केस का मीनिंग अलग है, लोअर केस का मीनिंग अलग है. All the keywords must be written in lower case. तो जो भी keywords है आपको लिखना है स्मॉल केसेस में लिखना है. ठीक है. Then these are the keywords. Quickly note down. These are the keywords which enhance the capabilities of the C programming. So हम क्या करने वाले हैं कि ये जो keywords है कि अलग अलग keywords जो है वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं. So it is nothing but that we are going to learn each and each keywords how to use that. So quickly take down. So these are the 32 keywords and which have a special meaning to a compiler. होने के बाद डन डाल दीजिए so we can go ahead.
ओके डन. सो लेट्स सी नाउ. जैसे कि मैंने कहा कि वी कैन यूज अपर लेटर, लोअर लेटर, डिजिट्स एंड एवरीथिंग. विद दैट व्हाट वी कैन डू, इट्स वी कैन क्रिएट एन आइडेंटिफायर. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफायर? ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मेन एक फंक्शन है एंड मेन इज अ नेम ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट आइडेंटिफायर. जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नाम दिया गया है. ठीक है, वॉट एवर द नेम इज देयर, राइट, टू आइडेंटिफाई यू. अगर किसी को आपको बुलाना है तो देर इज अ नेम दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड. सो to declare the name of variables for functions and array structures union like that, you need a identifier. Okay, so identifier refers to the name of variables, functions and arrays. So these are user defined names and consist of sequence of a letter digits with a letter as a first character. तो identifier क्या है? यूजर डिफाइंड नेम्स है. तो वो कुछ रूल्स है उसके कि आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद द लेटर. ठीक है, नंबर से चालू नहीं हो सकते. तो इसका एमसीक्यूज आ सकता है आपके एग्जाम में कि कुछ 3-4 आइडेंटिफायर्स है या वेरिएबल के नाम से उसको आपको बताने की कौन सा सही है, चार इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है. तो दैट कैन बी अ क्वेश्चन और होता है. ठीक है, सो आइडेंटिफायर यू हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है, so you can use both uppercase and lowercase are permitted, although lowercase are a commonly used. So normally हम lowercase में लिख सकते हैं, but you can also use a uppercase. The underscore character is permitted, मतलब underscore से आप underscore यूज कर सकते हैं. जैसे कि दो वर्ड्स है, ठीक है, कि कैरेक्टर वेरिएबल, तो कैरेक्टर और वेरिएबल में आपको अंडरस्कोर दे सकते हो. ठीक है, जो भी नाम है, ठीक है, पूरा नाम लिखना है तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिख सकते हो, या अंडरस्कोर कैन बी एट द फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है. ठीक है, सो व्हाट इज द रूल फॉर आइडेंटिफायर्स? सो सो रूल फॉर आइडेंटिफायर इज फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बिगिन विद द अल्फाबेट और अंडरस्कोर, दोनों में से कौन तो होना चाहिए. सेकंड, मस्ट कंसिस्ट ओनली द लेटर्स डिजिट अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. देन बहुत बड़ा नाम हमने लिखा, समझो कि बहुत सारा टाइप किया, तो कितने लेटर्स को लिए सिग्निफिकेंट लेगा या कौन सा नाम लेगा. तो ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी टेकन एज अ आइडेंटिफायर. देन यू कैनॉट यूज द कीवर्ड, जो भी हमने अभी लिखे कीवर्ड जो भी है उसको आइडेंटिफायर के लिए नहीं लिख सकते. यू कैनॉट यूज अ वाइट स्पेस, स्पेसेस जो है यूज नहीं कर सकते इन आइडेंटिफायर. ठीक है, तो ये लिख लो क्विकली, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. एंड यू मस्ट नो, क्योंकि हम बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फंक्शंस का नाम डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्चर का नाम डिक्लेयर करेंगे, एरे का नाम डिक्लेयर करेंगे, तो आपको ये आइडेंटिफायर के रूल्स यही सेम है. ठीक है, तो क्विकली टेक डाउन.
Okay, good. So this is the identifier. Then variable. So what is an variable? ठीक है, जैसे भी मैंने कहा कि you need to process the data. So you will accept the number, you will do the arithmetic operation and you will display the output. ये तो वो कहाँ पर आप स्टोर करेंगे? You need to store somewhere in a memory, in a RAM. So variable are used to store the data. ठीक है. So what is a variable? So variable are a named memory location which is used to store the data. और क्या कर सकता है? And can be changed, मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई विल राइट, जैसे कि ये वेरिएबल है, ठीक है. ठीक है, सपोज दिस इज द वेरिएबल, सो लोकेशन इज, ठीक है, सो दिस इज द वन वेरिएबल. ठीक है, सो इट हैव, हम इसमें कुछ स्टोर कर, सपोज हमने स्टोर किया 100. सो 100 इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी, राइट. सो इसमें क्या है, इस मेमोरी को कोई तो लोकेशन होगा कि जहां पर वो, मान लो कि इसका लोकेशन, जैसा आई एम गिविंग रैंडमली 10100000, लाइक दैट, जो भी है, ठीक है, या 1000 सिंपल लेते हैं, इट इज हैव 1000 लोकेशन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, कौन सा अभी डेटा कौन सा आपने स्टोर किया है, इंटीजर, कैरेक्टर, लाइक दैट. सो कैरेक्टर है तो इट विल टेक 1 बाइट. ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर मीन्स व्हाट, होल नंबर्स. सो इट विल टेक डिपेंड ऑन योर सिस्टम. ओल्ड पुराना अगर है तो इट विल टेक 2 बाइट्स. नाउ डेज एवरीबडी इज टेकिंग 4 बाइट्स, right. So this is the data. We are going to see a data type later on. So we are learning a variable. So variable have a location, we can store the value and we can give a name to location. जैसे कि ये इसको नाम देगी कि number या number, like that. So जो मेमोरी का लोकेशन है, we cannot remember each and every variable's location, memory location. So humans are normally comfortable with the names, right? That's why, जैसे भी आप भी देखो कि फोन नंबर में क्या होता है, यू हैव अ डिफरेंट नंबर्स बट यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरी नंबर. सो यू आर स्टोरिंग अ कॉन्टैक्ट नेम्स, राइट, or list of contacts. So it is a thing that similarly, so you cannot remember each and all the memory locations, so you can give a name to that and you can store the value in that. Now you can change the value. Suppose I want 100, हमने स्टोर किया था, बाद में मुझे लगता है कि 300. So this is nothing but the variable. So variable is a named memory location where we can store the value and whenever it is required to change, we can. Okay, clear? So draw this diagram and in your notebook quickly. There is another constant is there, same thing. For example, pi 3.14. Okay, it have a location like 2000, suppose, anything randomly. Okay. So what is a constant is there? So quantity is again a named memory location where we can store the value, but we cannot change the value, okay, during the program. So that is called pi. जैसे कि pi की value आपको पता है, which is nothing but 3.14 is there, constant होती है. So we can declare a pi is a variable constant name and then we can store the value, but we cannot change the value afterwards. You cannot say 5 or like that. So this is the constant and variable. Okay. So
So variable are a named memory location which is used to store data and can be changed. To indicate the memory location, each variable should be given a unique name. मतलब दो बार आपको सेम नेम आप नहीं दे सकते. You have to give a unique name called identifier. तो जो भी हमने identifier के रूल है, all the rules are applied to a variable. So variable names are just a symbolic representation of a memory location. For example, how I can declare the variable. For example, integer value whole numbers हमें store करने हैं. So I can say int is a data type. Which kind of data we are going to store? So that is nothing but data type int num. So num is a variable name of a data type. So here, how I can say in program, I can say int num. Okay, this is the declaration. How I can store the value? I can say num equal to 100. Okay, so you have to give a semicolon there. तो 100 स्टोर हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. So if I want to print the value of a variable, I can say printf double quotes. So I need to display the integer value. So I can say %d. So is a format specifier to display the integer. तो आगे आपको लिखना है num. So ये करके देखेंगे बाद में. Just see this one. So %d num. So it will display 100. Now if I want to change again, I can say num equal to 300. So it is going to change the value. Now at this point it will be a 300. If I print the value again here, so it will display 300. तो यहाँ पे आएगा 100. And when I change this one, it will give a 300. Okay. Similarly, I can also print the value of pi. Okay. So we need to declare a constant there first. But so here you have to %d, you can say pi. So it will display that one. Take a variable name. So we'll do that later on. First, concentrate on a variable. So you have to declare data type and name of the variable. You can store the value. So always the value is going to store from राइट हैंड साइड. लाइक मेरा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 100 है और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा वेरिएबल नेम है. सो ऑलवेज वेरिएबल नेम जो होता है वो लेफ्ट में होता है और वेरिएबल ही होना चाहिए. ठीक है. एंड इन अ वेरिएबल यू आर गोइंग टू स्टोर द कांस्टेंट वैल्यू. जैसे कि 100 है, वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ 100. 100 होता है. So 100 is nothing but called as a constant. So constants normally stored in a variable. So which is nothing means left hand side. So we have to use equal. Equal is a assignment operator. Okay. So this is the way you can store the value in a variable. Okay. I hope this is understood. Okay. So quickly take down this. लिख लो ये वेरिएबल मतलब क्या होता है, किस तरह से. क्विकली टेक डाउन.
Done. So in variable, so variable की जो भी है, all the rules which are from identifier, okay, same rules are there. ठीक है. So constant. So what is a constant? Constants are the term that cannot be changed during the execution of the program. ठीक है. So जैसे कि अभी जो भी numbers है, we cannot change the value of that. ठीक है, 1 है, 2.5 है, प्रोग्रामिंग इजी. सो ये कांस्टेंट अगर है तो स्ट्रिंग है, तो लाइक दैट. सो कौन से कांस्टेंट आप स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में? सो देयर आर डिफरेंट constants you can store: integer constant, floating points, characters, skip sequence, string, and enumerator. So quickly we'll go. So you can store decimal numbers, so 0 to 9 in a combination of that, then octal numbers 0 to 7, then hexadecimal digits you can store, so 0 to 9 and A, B, C, D, E, F. Okay, you can store in that. So for example, 0, minus 9, 22, octal number like this, hexa, decimal constant like that. Okay. So this is thing. You can use small caps A, B, C, D, E, F instead of uppercase letter while writing hexadecimal constant. लिख सकते हो. Every octal start with O and hexadecimal constant start with OX. तो इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. So this is the basic. Now floating constant, like real numbers you can store 2.0, 5.0 point, like 5, so 0.0023 4 like that. Then if you want to store the characters, you can use A, I, capital, M, small, capital F, like that. Escape sequence you can use, like जैसे मैंने बोला था कि you can use a escape sequence. So /n is there. Then when we are using a array, that null character, we can use a null character there in array to end of the array. Okay, multiple tab, horizontal tab also you can use. So these are the escape sequence are there we can use in C programming. Then strings in double quotes, it is treated as a strings. So good डबल कोट्स में मतलब उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, दैट इज नल स्ट्रिंग. Spaces you can give in double quotes, or you can write any character in that, or a number of character, it is called as a string. Earth is round slash and like this. So this is will print the earth is round and it will go into the next line. Enumerator are there that you can give a name to a numerical values like color if you have. So if you can say, so अगर आपको करना है 0, 1, 2, 3 like that, you can give a name to, जैसे कि signals होते हैं, signals have a value 0, 1 like that. So you can give a name to that. ठीक है. So it is called enumerator. Here is a color: yellow 0, green 1, black 2, white 3 like that. So it is the enumerator. Constants you can store. So this is a variable. You can store the variables value, which is nothing but the constant. Then types of data types are there. So there are two data types are there: primary or fundamental data types. That is, you are going to store the whole values, that is nothing but the integer type. Then floating, that you have a real numbers 2.05, that is floating numbers. Character you are going to store. So at a time you can store one character when you have a character data type. Then there are different derived data types are there, which are nothing arrays, pointers, structures like that. Okay. So this is the different types of data types. So how to declare a variable? Just I have seen that data types you have to write and name of the variable. So int, you can store whole numbers in that. Float, you have a amount. Char is a ch is a variable which can store the character data and which can hold the single character. Then so ASCII value is there. So 65 have an internal binary code and 65 represents A. 97 ASCII value represent A.
48 represent 0, 32 represent space. So ASCII value is what? Abbreviated from American Standard Code for information interchange. ASCII code represent text in the computer and other devices. Okay, computer can only understand numbers. So an ASCII code is a numerical representation of a character such as A, like that. Okay, so yeah, so this is the ASCII code. You can search and you can look at that. So it is a nothing but the ASCII code. So we have seen how to create a variables and all that. So in languages, we have seen the alphabets. With alphabets, we are creating the words. Words can create the sentences. Sentences can create the paragraph. Similarly, in C, we have alphabets, digits, special symbols. With that, we can create a constants, variables, and keywords already we have. So with that, we can create a instructions. So it is nothing but the commands, and in different commands with a certain sequence, we can create a program, and a set of program can create a software. So hence further, we are going to write instructions or the programs to perform a specific task. Okay. एनी डाउट इन दिस? जो भी अभी तक हमने सीखा, किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी. यस. सो बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, जस्ट आई विल शो यू द कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसके जो भी टाइप्स है, डेटा टाइप्स कौन से हैं और उसकी साइज क्या है. सो यू टेक डाउन दैट क्विकली. सो डेटा टाइप. So quickly take down this. So this is the by default that previously it was an integer that can store the integer values in this. So it was previously 2 bytes. It is taking the capacity is this. So unsigned int where you can, there is no minus sign is there. So that's why it is called as unsigned integer value, which can hold this value. Now everybody have a large setups, or it is taking a 4 bytes. Okay, so it is increased already. So it is like as long as equivalent to long int. So previously it was a 4 and it is a capacity of this. So long it is, अगर ये जो integer है तो it is have a 2 bytes, उसकी capacity बढ़ाने के लिए 4 bytes बढ़ जाता है and it have a capacity of this. ठीक है. Then short int is there, unsigned short int is there, float is there. So float will take a 32 bytes. So 32 bits and 4 bytes is there. If you want to increase the capacity of a float, you can use the double. So double have a 8 bytes. Okay. So it is a range is like this. Long double is there. It is taking a 10 bytes. The capacity is there. Character, if you want to store, you can store a single character in that. So it is a, if you want to, जो भी मैंने अभी ASCII कोड दिखाता है उसके माइनस जो भी वैल्यूज है होगा प्रिंट करने, तो यू कैन यूज दिस वन. और यू कैन अनसाइन कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू राइट अनसाइन कैर and you can store from 0 to 255 like this. So quickly take down this. This is the which kind of data you are going to store and उसकी कैपेसिटी कितनी है. ठीक है. नाउ डेज एवरीबडी इज इंटीजर क्या करता है, 4 बाइट्स यूज करता है, तो उसकी कैपेसिटी ये है. अनसाइन इंट अगर लिया तो इसकी कैपेसिटी ये है. ठीक है. सो क्विकली टेक डाउन. ठीक है. सो टुडे वी विल कंक्लूड आफ्टर दिस. So quickly take down and type done when you done this.
Okay, anyone have any doubt? Okay. So today we have completed. First, we understand what is a computer, what characteristics of a computer, right? Then what computer understand. So computer understand the low level language, machine level language, zeros and one. Then we have seen the different types of languages like low level, assembly level, like, and high level. What is a high level language? We have seen. Then in that, how, what is a compiler, interpreter, that is the we have seen. Then how, what is a, how to install a IDE, okay, and how we can write a code, वो देखा हमने, how we can compile the code, how we can run that code. Then we started with the simple program हमने लिखा था, what is a void, what is a main, what is a printf, then hash include, right? What is a main, what is a printf function, what is stdio.h. We have seen all these things, right? Then we started with the learning step by step. What is a keyword we have learned, right? Then what we can use is letters, digits, right? Special symbols. Then how we can create a identifier, or what is a identifier, what name we can give a to a variable. So then what is a variable? Then what is a constant, right? So normally constants are stored in a variable, right? Like this we have seen. So further we are going to see the how we can store the values in a variable, how we can interact with the multiple variables, what operations we can do, how we can take a decision like that in a further. We are going to see that one. ठीक है? Any one, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, so this is the way we are going to see. We are going to see now one by one. So we have seen how to write the variables, what is the keywords, then what constants क्या होते हैं ये देखा हमने. Then now we are going to see instructions, right? And then we are going to write a program further. ठीक है? किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ है तो पूछो. आई विल अपलोड द टुडे जो भी मैंने कोड किया है वो मैं अपलोड कर दूंगा. नोट्स आई विल अपलोड इन टेक्स्ट फाइल, सो यू कैन वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, जैसे कि बाइनरी है, हाउ वी मेजर द बिट्स, बाइट्स, kilobytes, like that is there in the notes. You can go through it and you can learn from that as well. ठीक है? Any doubt? किसी को कुछ पूछना है? Otherwise we will stop for the day and tomorrow we will start probably early. So today was the first day, so yes. Okay, so this is the way you can stop the editor. Okay. So chalo, so we will meet again tomorrow. Sure. So we'll conclude the meeting.